Shima, please read crops in the laterite soil. Please start reading. Laterite soils lack fertility due to intensive leaching. When manured and irrigated, some laterites are suitable for growing plantation crops like tea, coffee, rubber, cinchona, coconut, araca nut, etc. In some areas, these soils support grazing grounds and scrub forests. Subhash? Economic value of lateritic soils. Laterite and lateritic soils provide valuable building material. These soils can be easily cut into cakes but hardens like iron when exposed to air. As it is the end product of weathering, it cannot be weathered much further and is And is durable. Okay. So crops in the laterite soil. Lateritic soil means क्या है? Laterite soils lack fertility due to intensive leaching. Now what is leaching? In the last class we have seen leaching का definition देखे थे. What is leaching? Nutrients क्या है? When they are washed away, when the nutrients are washed away due to the water, then it is called as leaching. Okay. So leaching means nutrients get washed away by the water. So intensive leaching, when manured and irrigated, some laterites are suitable for growing plantation crops like tea, coffee, rubber, cinchona, coconut, and araca nut. In some area, these soil support grazing ground for scrub forest. माने चरवाहे जो रहते, जो जो क्या बोलते हैं, जानवरों का है चराने जब लेके जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स. एंड स्क्रब फॉरेस्ट माने छोटे छोटे पौधों का फॉरेस्ट. इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लैटराइट. ये लैटराइट माने लैटर माने विच इज नोन एज ब्रिक. ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता. जैसा ये देखिए आप, ये जब आप इट बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर. पहले अगर एब्सेंस ऑफ एयर में रखे, दे बिकम्स वेरी सॉफ्ट. आप इजीली हाथ को पकड़े कट कर सकते हो. बट जैसा एयर रखती है उसको, इट बिकम्स वेरी हार्ड लाइक आयरन. एज द एंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही वेदरिंग से हुआ है. ठीक है. ये जो सॉइल बनी, सॉइल ही वेदरिंग से हुआ, तो इसमें और वेदरिंग का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता. समझ में आ गया? तो दिस इज नोन एज द क्रॉप्स इन लैटेराइट और लैटेराइटिक सॉइल. क्लियर है?